For years, Pakistan has kept the public of Balochistan bereaved of all the primary factors required for their development. As if the absence of fundamental rights, social security and unemployment was not enough, the establishment is now denying them the most basic right to education. However, people in the region have been continuously emboldening their voices against the repressive policies of Islamabad. We have a report. Scores of students gathered in Quetta, the capital of Balochistan, to seek their right to education. Disgruntled over the injustice done to them, Baloch Students' Organization held Student Power Restoration March outside National Press Club in Quetta and demanded the restoration of student unions in educational institutions, an increase in the education budget, and an immediate end to increase in tuition fees. The protesters also called for access to the internet for students from Balochistan, former FATA, POK, and Gilgit-Baltistan, and the formation of sexual harassment committees to investigate cases of harassment by college and university staff and teachers. स्टूडेंट्स को कोविड में इधर बैठने का कोई शौक नहीं है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मजबूर है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये गुस्सा समझें, लोगों की मजबूरी समझें, यह हमारा असासा है। आप इनको कोई साजिश समझ रहे हैं, कभी इनको कोई फॉरेन प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, इनकी बात सुने, इनकी दिलों में जो सच्चाई है उसे पहचानने की कोशिश करें। अगर ना किया तो फिर ये तहरीक और मजबूत होगी और ये हुक्मरानों के जो गिरबान है उनको पकड़ें। Pakistani deep state is not just systematically plundering the resource-rich Balochistan of its minerals, but is working at an extensive multi-pronged design to push Baloch towards a political catastrophe. Working on the commands and instructions of the military establishment, the puppet government of Imran Khan is not only exploiting their fundamental rights, but is also denying them education. As per students, there is unnecessary interference of the Pakistani army in universities, and the campuses have been turned into military cantonments. तुलबा को दबाए रखने की ये जो खौफ है तुलबा से, ये यहीं से आश्कार होता है। अगर खौफ नहीं होता तो बलूचिस्तान के तमाम जामियात जो है वो छावनी में तब्दील नहीं हुए होते। आपको कुछ डर है, आपको इन तुलबा से कुछ तो खौफ है कि आपने इनको जो है बंदूक की जंगी हथियारों की नोक तले दबाए रखा हुआ है। Pakistan government does not want Baloch to read, write, and grow into an informed, efficient, and employable mass. While the quality of a handful of higher education institutions has degraded considerably owing to the system's apathy, the universities have now ended the scholarships on the reserved seats. Anyone who dares to raise his voice against the Pakistani discrimination and human rights violation in the region is subjected to violence, imprisonment, exile, or even death in some cases. मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान जो आज एक नई नौआबादियाती निज़ाम से गुजर रहा है, यहाँ पे एक ख़ास तबके, रंग, नस्ल या कौम पे जो है जिस तरह से मार्जिनलाइजेशन की जाती है और जिस तरह से उनको टारगेट किया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे तलबा को चाहिए कि इस जो सिस्टम है, जो हमारे तालीमी इदारों में जो ये जो डिक्टेटरशिप सिस्टम है जो हमारे तालीमी इदारों में मुंतकल हो चुका है, जो हमारे स्टूडेंट के सियासी होने पे हम सियासी होना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, फिर भी हमारे यहाँ पे सिस्टम को सबसे बड़ा डर है। और यही जब तालीमी इदारे जो जिस तरह का स्टूडेंट्स का इस्तेसाल करते हैं। Educated youth means informed youth, and an informed youth will travel any distance to reclaim the rights Pakistan has trampled upon for decades. So this is the reason Pakistan, which claims to be the honor and the well-wisher of the region, has systematically kept people away from education. A handful of those who have managed to get good education have become a thorn to Pakistani eyes, and the authorities have tried almost every devious trick in the book to eliminate them.